Hi, 12th standard. We are meeting today for one important sum for integration. Welcome to Dev Sir's Mathemagic. Simplicity at कुछ भी पूछो. Okay, so आज क्या देखने वाले? There is one JEE problem. Textbook के बाहर का है. But a similar substitution problem is there in the textbook. But this is from outside the textbook. Ask for JEE. अभी JEE में क्यों पूछा है वो देखेंगे. So let us go straight away to the problem. All set? Fine. चलो देखेंगे. So the problem says integral of sine of log x plus cos of log x dx. Solve it. Now the thing is, integral of sine of log x के लिए कौन सा भी फॉर्मूला नहीं है. I mean you just can't separate the integrals because you won't be able to proceed further. Okay. Derivative is much more flexible because derivative of sine log x we all know. We have to use the chain rule and solve. But for integration थोड़ा rigid है. Certain rules, certain formulae, we have to learn them by heart. Okay. But now what? Over here I have made the substitution log x equal to t. Now log x equal to t कब करते हैं substitution? When dx upon x is present. Denominator में अगर x है तो usually log x equal to t substitution होता है. लेकिन denominator में कुछ नहीं है. Still we are making the substitution log x equal to t. जी हाँ, इसीलिए JEE में पूछा है अलग substitution. So for 2 or 3 sums क्यों ध्यान में आएगा? So after putting log x equal to t, don't take derivative. d by dx मत लो. Okay? Use the basic definition. We have seen many times when log x is given, it means log of x to the base e is given. Base e is assumed. It is understood, which is not mentioned. So log of x to the base e equal to t ऐसा लिखना है. बाद में log remove करो. Definition 11th standard definition of logs. When you remove log, what happens? यहाँ पे देखेंगे. देखो, when I remove log, e goes on the right hand side as e raised to t. यहाँ पे base है, यहाँ पे भी base ही रहेगा. So when I remove log, x नीचे आता है ऐसा. x comes below और यहाँ का e चला जाता है इधर e raised to t. That is the definition of log. How to remove log, which we have learnt in the 11th standard. Okay. Anyway, so we get x equal to e raised to t. दो चीज हो गए. Log x equal to t, x is equal to e raised to t. Fine. Okay. Now differentiate with respect to x or differentiate with respect to t. It's your choice. कुछ भी किया तो भी सेम आने वाला है. So d by dt of x is equal to d by dt of e raised to t. d by dt यानी क्या? Derivative with respect to t. So dx by dt is equal to e raised to t का derivative e raised to t with respect to t, right? Okay. Now as usual cross multiply. So dx equal to e raised to t dt. That is what we get. dx is equal to e raised to t dt. That is the third thing we have got from the substitution method. Now let us put all these things in the integral. Okay. अभी integral में क्या है देखो. I is equal to log x is t sin t plus again log x is t cos t. यहाँ पे t डाला, यहाँ पे t डाला because log x equal to t is the basic substitution. उसके बाद क्या है? dt क्या? I mean dx क्या है? What is dx? e raised to t dt. Quite simple. So the problem has got converted into e raised to t मैंने सामने लिया है sin t plus cos t dt. Clear? After making the substitution there should be no x anywhere. सब जगह पे t आ गया. Clear? टाइप रिकॉग्नाइज किया क्या? स्माइली पूछ रहा है. किया? देखो हिंट दे रहा हूं. e raised to x fx plus f dash x is equal to e raised to x fx plus c.
सो टाइप रिकॉग्नाइज कैसा करना है, e रेस टू x के सामने यू हैव अ बिग ब्रैकेट, सॉरी सिमिलरली e रेस टू t के सामने यू हैव a big bracket. After getting that big bracket, inside the bracket you are going to search for fx and f dash x. यहाँ पे ft and f dash t. ft is nothing but it is like fx only ना, x के जगह t है, right? So now the formula says e raised to x fx plus f dash x is equal to e raised to x fx plus c. That is the answer. So once we show over here what is ft and f dash t, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आंसर आने वाला है, ये टाइप है, ऐसा टाइप रिकॉग्नाइज करने के. ओके, सो इफ यू सी द बेसिक प्रॉब्लम, वी वोंट इमेजिन कि इसमें कन्वर्ट होने वाला है e रेस टू t में. वो कैसे कन्वर्ट हुआ? बिकॉज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशंस एंड दिस इंपॉर्टेंट स्टेप, x इज इक्वल टू e रेस टू t का स्टेप इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देखो ना, e रेस टू t sin t plus cos t, आई विल से let f of t equal to sin t, f of x के जगह f of t equal to sin t. Derivative d by dt, derivative of ft is f dash t, derivative of sin t is cos t. So if ft is equal to sin t, f dash t is equal to cos t. अब सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 4 में, करो सब्स्टिट्यूट. e raised to t sin t के जगह ft, for cos t I am writing f dash t dt. Now according to this formula it is e raised to x fx answer. According to this formula I am going to get e raised to t ft plus c. No rocket science, simple, right? So this is our answer. लेकिन थोड़ा लिखना है, थोड़ा लिखना है आगे. तो क्या लिखेंगे? योर फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x. सो t रिमूव करो. कहां से रिमूव करने का? सी व्हाट वी हैव रिटन. सब जगह देखो t कहां पे है, यहाँ पे. सो फॉर t व्हाट एम आई गोइंग टू राइट? log x. रिमूव t नाउ. और यू कैन डू वन मोर थिंग, और एक चीज बोलता हूं मैं. डायरेक्टली e रेस टू t देखो, ट्राई टू सर्च फॉर e रेस टू t. वेयर इज e रेस टू t? ओवर हियर. सो डायरेक्टली फॉर e रेस टू t आई कैन राइट x. फॉर ft सर्च, ft कहां पे? ft तो यहां पे ही है, sin t. वापस t को सब्स्टिट्यूट करो. What is t? Now for t you can write log x. X sin log x. So once you get this formula, e raised to t ft plus f dash t, it becomes very simple. E raised to t ft plus c. Okay? So this was another interesting JEE problem. Hope you found it interesting. So ये टाइप के टेक्स्ट बुक में है, लेकिन log x सब्स्टिट्यूशन के कम है, एक दो ही है. I think there is only one sum. So go through that. We will take integration by parts next time. Problem or two. 3 months remaining for the exam. Start studying well. लिखो, कुछ तो लिखो और डाउट आया तो पूछो. But unless and until you write, you won't get doubts. As easy as that. Okay? So that will be all for today. मिलेंगे 2-3 दिन में with integration by parts. Bye. Take care.